and we warmly welcome you all to the webinar 16th of the webinar series 2.0. Myself, Yasir Ahmed, a student of BS Management and Public Policy at the National Defense University, Islamabad, and currently I am serving as the Academic Secretary at PASA and the project lead of this webinar series 2.0. Ladies and gentlemen, it is a privilege and honor for me to introduce our distinguished speaker for today's webinar, Sir Ikram Syed. Sir Ikram Syed is a seasoned academician and researcher with a distinguished 33-year career dedicated to the fields of strategic management, social science, and national security. A cornerstone of his professional practice is the development and execution of sophisticated training programs for senior executives and management teams. He excels at designing customized curricula for both governmental and corporate environments, meticulously tailoring content to address specific organizational challenges and strategic objectives. Ladies and gentlemen, as you know, PASA is a student-led organization committed to promoting the disciplines of public policy, governance, and public administration. Its vision is to foster academic growth, ethical leadership, and collaboration among students and professionals across Pakistan. To carry forward its vision, PASA has launched this webinar series 2.0, which comprises of almost 20 webinars, and we will be done today with almost 16 of it. Ladies and gentlemen, today's webinar is on a highly significant topic, the bureaucratic mindset, bridging policy and implementation gaps. We all know that great policies often look perfect on paper, but the real challenge begins when it's time to put them into action. Somewhere between policy design and on ground delivery, things often get stuck. That's where the bureaucratic mindset plays a crucial role. Today, we will explore how the attitudes, routines, and decision making styles within bureaucracy can either drive successful implementation or create barriers to it. We will also talk about how public servants can move beyond rigid procedures and adopt a more flexible, citizen focused approach to governance. So, let's begin this important conversation about transforming bureaucracy from being just policy executors to true agents of change. Respected audience, as usual, we will be having a Q&A session at the end, and we will be also having the remarks by our esteemed president of the Public Administration Students Alliance PASA. So, without further delay, I would like to warmly welcome our distinguished speaker, Sir Ikram Syed, to share their insights on this vital topic. Sir, the floor is all yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Yasser. Thank you very much for your kind introduction and giving me the opportunity कि मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों से शेयर करूं. ये हमारे नेबरहुड में कोई आवाजें आ रही होंगी आपको, pardon me for that, वो कोई अपनी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो I'll try to be more clear in terms of telling you what my experience has been with this particular field of two dimensions, public policy and public administration. I've been with this domain from last 35 years. कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कोई 5-6 साल जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई, तो मैं हमेशा से आप लोगों को, स्टूडेंट्स को यही कहता होता कि आप का जो टॉपिक है ना, यही वाली कि गैप एनालिसिस किया करो, कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, चल कैसे रहा है काम और क्या होना चाहिए, बस दैट्स इट. और इस गैप को जितना कोशिश करेंगे प्रैक्टिस में, आगे प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं पब्लिक पॉलिसी वाले, वो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूंगा कि जब भी आप किसी सिस्टम को देखो ना, तो उस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल्स होते हैं, उस सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, उस सिस्टम का एक एनवायरनमेंट होता है, और उस सिस्टम के कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है. अब इनको माइंड में रख के देखो कि 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कभी भी किसी सिस्टम की, पूरी दुनिया के किसी सिस्टम की भी नहीं दी जा सकती. एक रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर यू गो अराउंड बाय रीजनेबल एश्योरेंसेस. तो एज अ पर्सन कि जब मैंने 1980 आप कह लें कि सर 1992 में
When I started preparing for my CSS exam, and I was like looking forward to join the club, हमेशा कहते थे क्लब ज्वाइन करना है भाई, क्योंकि इसके अंदर फिर we will be able to do miracles और मैं अपनी ड्रीम फुलफिल कर पाऊंगा. तो उस टाइम के ऊपर I realized one thing कि there is a natural phenomena, there is an unnatural. ठीक है. So आप जब किसी सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक अननेचुरल फिनोमेना की आपको एक ड्रीम दिखाता है, और वंस यू गो इनसाइड द सिस्टम तो व्हाट हैपेंस कि वो आपको एक रियलिटी बाइट करे. So that reality bite, I'll be discussing it with you, and then I'll always ask the youngsters के be rational actors यार. ये जो हम बहुत इमोशनल है ना, हम irrational है ना, हम कैटेगराइज अपने आप को करते हैं ना बड़े रियलिस्टिक पोडियम पे खड़े हो गए ना, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई एम गोइंग टू जॉइन एनी ऑफ द कैडा. ना, बी रैशनल एक्टर्स. जिस तरह इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया के अंदर कैसे चलती है कि देयर इज अ डिमांड एंड अ सप्लाई, बट देयर इज अ हिडन हैंड, एंड दिस हिडन हैंड नीड टू बी अंडरस्टूड, व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, but it need to be understood as a reality. And this hidden hand will always be the one which will be a major actor in defining the course of action. Acha, over the years, what I have come across is a young mindset. Just मैं जिसका बता रहा हूँ कि when I started, the young mindset is always looking toward a target or an aim or an ambition which is out of the dreams. When you enter into it, you come to know the realities, and the realities actually are way too different from what you have dreamt of. अच्छा, अब टॉपिक बड़ा अच्छा है कि भाई ये माइंडसेट जो है, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर हम किसी माइंडसेट की बात करें तो क्या ये इंडिविजुअल माइंडसेट है कि इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट है. यहां से मैं आपकी बात स्टार्ट करूंगा कि जब हम लोग ने ज्वाइन किया और हम लोग आपस में बैठ के ट्रेनिंग एंड रेस्ट ऑफ द जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस के यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट माय माइंडसेट, इज इट द mindset of my senior, or is it the mindset of the person who's been working there from last 25 years, or is it the mindset of the institution, or we have got this institution as a legacy from the British. और आप याद रखिएगा कि ये एक माइंडसेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट is the mindset of the bureaucracy in Pakistan. No matter who joins it, no matter who is running the show, no matter who is part of the operational, tactical, strategic level, it's the institutional mindset that prevails. And it is a top-down approach. पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते पढ़ाते कई दफा मतलब किताब को उठाएं तो वहां पे जब हम कहते हैं ना बॉटम अप अप्रोच कि जी आप सबसे पहले स्टेक होल्डर को देखें, स्टेक होल्डर की विशेष को अंडरस्टैंड करें, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, फिर आप क्या करें कि एक सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करें और उसकी सिस्टम की पॉलिसी जो है अल्टीमेटली वो डिलीवर करे द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर. नहीं, institution is supreme, institution is prime. In this case, not in this case, in majority of the cases where the institutions in Pakistan have seen themselves working and delivering in whatever form, it is the institutional mindset. वो चाहे political institution है, चाहे वो आपके bureaucratic institution है, चाहे वो आपके पास जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपके पास मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है. हम स्टार्ट कहां से करते हैं? लेट्स से कि मैं एक और इंस्टीट्यूशन की बात करने लगा हूं व्हिच इज नोन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. भाई हमारा एक कल्चरल सोशल इंस्टीट्यूशन है जिससे ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट आता है. अब ये सोशल में आपके पास इंस्टीट्यूशन क्या है? पावर सेंट्रिक. एक गांव के अंदर आप चले जाए तो वो चौधरी साहब की, वो खान साहब की, वो डेरे की, वो
एक सुप्रीम पर्सन या फैमिली की रख रखाव को मेंटेन कर रही है सोसाइटी, वो नहीं, खुद नहीं कर। उनको मालूम है कि अगर चौधरी साहब नहीं है तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा, सारी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। ये चौधरी साहब की सुप्रीम अथॉरिटी, पावर, एक प्लेसमेंट, एक ऑरा, एक 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 एक, एक ग्रैंडियोर है कि जिसकी वजह से हम सारे बचे हुए हैं। एंड दैट्स द सोशल इंस्टीट्यूशन माइंडसेट। हमें एक चौधरी सेवियर चाहिए, हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए हु हैज होल्ड ऑफ द रिसोर्सेस, who can speak the voice, who is seen as a crusader। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर, अब इसको और लेवल, छोटे लेवल पे, घर के अंदर, ठीक है, आपने कहा कि जी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर, पैट्रियार्टिकल मैकेनिज्म, मैट्रियार्टिकल नहीं, पैट्रियार्टिकल, पैट्रियार्टिकल एस्पेक्ट। माँ को बहुत मान है बेटे के ऊपर, बच्चों को बड़ा मान है अब्बा के ऊपर, बहनों को बड़ा मान है जनाब भाई के ऊपर। सो इट इज अ मेल dominated, power oriented, supreme social structure that is giving birth to every institution wherever we go। Fortunately or unfortunately, ये हमारा एक कल्चर पैरामीटर है। और यहीं से उठ के आप कहें जी 2.7% जितने भी CSS के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, या आपके पास जितने भी बच्चे PMA में जाते हैं, जितने भी बच्चे जुडिशरी को ज्वाइन करते हैं, जितने भी बच्चे आपके पास, लेट्स से एक पिलर की बात नहीं करते हम, ये मेरे सामने टीवी लगाओ कि हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं, किसी भी नोड से आप बंदे को उठाइए, इंस्टीट्यूशन में डाल दें, वो अस वर्सेस देम के इक्वेशन में फिक्स में आ जाएगा। एंड दैट इज नॉट द इंस्टीट्यूशन, दैट इज द सोसाइटी। अभी तक चल रही है, 2025 तक यही चल रही है। आप अपने सोशल स्ट्रक्चर के अंदर पावर को, रिसोर्सेस को आइडियलाइज करते हैं, और यही आइडियल मैकेनिज्म becomes the mindset of a institution, and the institution then trickles down this mindset to the individual who joins the institution। A commoner, word commoner का यूज करते थे हम, ठीक है, अभी भी करते हैं। Commoner is not a bloody commoner, it's a supreme person। So हम कहते हैं commoner and the common man। So जो the gap है ना माइंडसेट का, वो सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने से। सोसाइटी नीड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, सोसाइटी नीड टू बी रीइवैल्यूएटेड, रिव्यूड, ऑडिटेड, इसका फोरेंसिक्स होना चाहिए, और जो कि 2025 तक प्रिवेल कर रहा है, जहां पे आपको एक छोटे से ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के 15 बंदे, ज्यादा कह दिया 7 बंदे भी, वो लगेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें, या इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात करें, या इक्विटेबल पावर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट की बात। वो पावर बहुत तरह की हो सकती है, वो हायरार्किकल पावर भी हो सकती है, वो आपके पास पावर कैन बी ऑफ अ मॉनेटरी रिसोर्सेस, दैट पावर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द पावर ऑफ नंबर्स। मैं तो वो स्किप कभी नहीं करूं। आप चले जाइए रिलीजियस सेटअप के ऊपर भी, पावर स्पीक्स द लैंग्वेज। इट्स नॉट that the manifested Quran speaks the language, it is the power speaks the language, it is the person who holds the power, the mindset of me versus you, us versus them, that speaks the language। Question आपके सबके दिमाग में होगा, सब बच्चों के दिमाग में, आपने फिर क्या किया था? आपने 18 साल वहां पे गुजारे, क्या किया था? आपके दिमाग में क्या ऑप्शन है, क्या होना चाहिए? ठीक है, बड़ी अच्छी डिबेट आजकल चल रही है। आई वाज एट अ प्लेस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट जनरेशन Z, generation alpha, generation beta। So
ये जो जनरेशनल ट्रांसफॉर्म, अभी अब यासुन ने बड़ी अच्छी बात की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करेंगे ना, वो जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को पहले स्टडी करना पड़ेगा। वो किस माइंडसेट के साथ ग्रो हुई है, और उस माइंडसेट में एक, अगर मैं एक इंडिविजुअल को भी उठाऊं आउट ऑफ द एंटायर सैंपल साइज, इफ आई पिक अप अ वन इंडिविजुअल, तो उसके माइंडसेट को मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच हो जाती है। आज का सोशल मीडिया इज अ बिग इंस्टीट्यूशन। द पर्सन who is an influencer, called an influencer, has got more likes, has got more followings, so he's got the nasha of being a person who's got so much millions of likes and so many people looking to that person as an individual who is seen as an iconic. Same is the case economics के अंदर देख लीजिए, ब्रांड पावर। तो ब्रांड का माइंडसेट क्या है, मैं आऊंगा उसके ऊपर कि ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट और हम किस तरह इसको गैप को मैंने, तो ब्रांड्स का माइंडसेट क्या है यार। एक हनीफ टेलर जो है इस वक्त मोहल्ले के अंदर बैठा, उसका शलवार कमीज पहनने का शर्म आती, नहीं ईद पे सलवाएंगे, बनंजा चले जाएंगे, डाइनर्स चले जाएंगे, डी डॉट चले जाएंगे, क्योंकि ब्रांड इज द पावर, एंड द ब्रांड हैज क्रिएटेड दिस पावर as an institutional mindset in the market. Brand prevails. You're wearing a brand, you speak the language of us, not them. ये कौन है यार, ये तो राशिद टेलर से कपड़े सिलवाता है। राशिद टेलर कौन, वो गली नंबर 6 के अंदर। नादरा का कार्ड देख लीजिए कि एतराज आया कि इतनी बड़ी हाई सोसाइटी की स्कीम है, सेक्टर है, आपने हमारी घर को लिख दिया गली नंबर, आपने लिख दिया घर नंबर गली नंबर। अरे ये तो एवेन्यू था। तो माइंडसेट सोसाइटी का है भाई। आप चले जाइए, इवन अंदरूने लाहौर चले जाइए, अंदरूने पिंडी चले जाइए, पेशावर चले जाइए, यू विल फाइंड the structural class system developed over there. And that structural class system is developing an institution's mindset. So, a person like me, when stood against the evils of a system, actually was standing against an institution. और इंस्टीट्यूशन ने मेरे सामने चार्जशीट रख दी कि भाई आप जिस सोसाइटी से आए उसको पढ़ लो, वहां पे जाओ, वहां पे ये चीजें प्रिवेल करती हैं, ये चीजें वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, और वही छापा मैंने लगाया। इट्स अ कॉपी पेस्ट थिंग। How do you want a system to run in a different way when the society demands the system to be configured and run, executed, managed, and controlled in a bureaucratic, power-oriented domain mechanism? So, abhi bhi, question comes to my mind, what I have done for the system. Have I gone back to the society from where I started my journey and went to the institution, looked at the parameters of the institution, developed that mindset, which was the mindset of the institution, and I remained there for so many years, started working in a institutional mindset way. So, coming out of that institution, going to the primary institution of the education, and helping people understand, do the forensics. ये सिस्टम ना इज डिलीवरिंग, याद रखिएगा, सिस्टम अगर डिलीवर ना कर रहा हो ना तो क्योटिक हो, तो क्योस नहीं, आपके पास सिस्टम इज वर्किंग एंड दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय मेनी, दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय द masses, आई टेल यू दैट। आज भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी का वॉलपेपर आप लगाने को प्रेफर करते हैं अपनी मोबाइल फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। वो जो एक नॉर्मल मॉडल है, it's always a center of joke. A common man's car or a common man's cart is the center of a joke. आज भी, despite of the fact कि I am sure कि
जिस शहर से भी आप हैं, तो आपको नजर आएगा कि वहां पे द मेट्रो इज देयर, एंड द मेट्रो इज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग द सोसाइटी, जिसमें माइंडसेट आ जाए कि अब फ्रॉम द टॉप elite to the common person, everybody should travel in the same standard bus, wait at the terminal, take the ticket, move at the same speed, respect each other's space. So the social institution is crying, let's do it, let's do it. But the elitist of the model, it's not by the elite, it's by the people who have the wishes and desire to be an elite. 2015 से लेके अभी तक कायदन यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे पब्लिक पॉलिसी में से पढ़ के गए, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं उनके देख रहा होता हूँ कि यार व्हाट इज दिस। सोशल मीडिया पेज के ऊपर ना एकदम से ठा करके टैग लगता है कि जी आई हैव ज्वाइंड द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज माय ग्रुप, और पीछे पाकिस्तान का झंडा, एक कुर्सी, उसकी तस्वीर, वो डिफाइन की जाती है। Nobody is talking about the responsibility on the shoulder. Nobody is talking about the accountability. Oh, मैं accountable, अब मैं accountable नहीं होगा, अब मुझे immunity मिल गई, I am the immunity person in the society because I hold this cadre of the untouchables. You ask me again, sir, आपने क्या किया था? Okay, in my 18 years, I reach to the stakeholders. दरवाजा खोला नहीं उससे काम नहीं चलेगा भाई, उस दफ्तर का टेरर ही बहुत है, उस जगह तक आने का ही टेरर बहुत है। यू रीच आउट, और वो भी फिर 4x4 में नहीं, बड़े आजिज होके, बड़े नॉर्मल होके लोगों तक पहुंचिए और पूछिए कि जनाब मेरे ऊपर क्या इल्जाम है, मैंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। And then the society will start accepting this cadre, not us versus them. Even sit with the family and talk about this thing. That there has to be a rationality in terms of ये जो elite class हमने elite model बनाया हुआ है घर के अंदर भी, इसको भी थोड़ा सा revisit करना है। फिर रास्तों के ऊपर भी आपके पास, let's say I'm talking about street, school, college, university, bazaar, market, transportation, food. अच्छा, आप कहते हैं कि जी चाइनीज के पास भी तो बहुत सारे elites हैं। Even the countries we talk about कि वो communality का concept या commoner concept आया था, तो did they wiped out everything? No. This sense prevailed because society need to be restructured. The alpha, beta generation need to be given a brought up mechanism in which they understand the reality that this is what we have been doing wrong and this is what we should not be repeating. Okay, now institutional mindset से individual mindset किस तरह अपनी connection लेता, ये वही है कि आपने शायद when I was watching this one of the movies कि जिसके अंदर वो avatars थे, ठीक है। So you sit in a, आप एक individual क्या है, वो एक incubator में लेट जाता है और वो अपने avatar के साथ फिर connect होता है। Avatar is the one which is going into the office in the institution, and that avatar is way back connected with somebody who is in an incubator or whatever that machine. So connect कर रही थी उस avatar को to move around the society. We have to ask ourselves a question.
institutions, mindset, dilution is possible through social restructuring. And this social restructuring need to be recalibrated at an individual household mindset. घर के अंदर ही जिक्र हो रहा है कि तालीम जरिया रोजगार एंड पावर, अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए। अच्छी पोजीशन मिलेगी तो तुम सारे काम करवा लोगे, जबकि तालीम should have been a source for wisdom. Aristotle, I know that I don't know. That should have been the focal point. तो वो जो मजलिस खबरगान है ना, काउंसिल ऑफ द वाइज है ना, उसको रिक्रिएट होना है सोसाइटी के अंदर, जो कि अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस. People not willing to sit face to face and talk. They are sitting with one another, not face to face, but face to a blue screen, and they are getting the entire set of information, structured or unstructured, or आपके पास fake or original, whatever. And individuals, वही वाली बात, they are in that particular coffin type incubator, and they're connected with their avatar, and that avatar is wired again with some hidden hand policy maker. A social restructure is being done on a seconds basis, on a nanoseconds basis. So the mindset of a household institution, that need to be corrected first. We need to sit with every young couple, newly married couple, tell them, if you want the system to regain its energy and wisdom, you need to start from here. You need to start developing a narrative which is a non-power based, which is a meritorious based, which is inclusive based, which is based upon the values and the norms and the cultures, which is based upon acceptance of a say, no matter who is saying. हम सिर्फ उसकी बात सुनते हैं, who's more powerful, who's more beautiful, who's wearing a beautiful dress, who's got more way of tackling these narratives from one end to the other end. Nahi. Look not who's talking. What is being said is very important. And we need to decipher a couple of things. And the very important thing is we need to move away. We need to move away from the current institution of a mosque, which has gone to an extent that they have not been able to decipher Quran. They have not been able to decipher Hadith. They have been developing the green box chanda collector institution and the hub of sectarian based voices. And even then, the person who is leading the entire positions is away from the other integrated approach mechanism of gaining wisdom. तो household institution को एक integrated knowledge gain mechanism adopt करना होगा, जो कि फिर generation after generation transfer हुई, जिसके अंदर political, economical, social, technological, environmental, legal nitty-gritty सारी connected हुई. तब जाके you will be able to see a clear picture कि हम एक अच्छा mindset develop करके now we will be
sending them to places where they will be deputed and they will be working as an institution and trying to recalibrate the institution, और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आप हैरान होंगे कि the most powerful position is not of a deputy commissioner or a commissioner or a DPO. It is the PA, personal assistant. ये वो ब्यूरोक्रेसी के परमानेंट plug and plays हैं, the people who maneuver the positions all over Pakistan. ये एक, अब मैं अगले साल में इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट एक रोटेटिंग है, एक परमानेंट है। इंस्टीट्यूशन ने अपना परमानेंट टैसिट बेस्ड माइंडसेट रखा है, वो रखा है सेक्रेटेरियल पोजीशंस के अंदर, पीपल हु आर एक्चुअली ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशन, जिसका कांटेक्ट है जनरल पब्लिक के साथ, जिसका कांटेक्ट है स्टेक होल्डर के साथ। The policy maker, the bureaucratic policy maker who joins from Walton to the seat, वो रोटेशन के अंदर, वो परमानेंट नहीं है, वो चाहता भी नहीं है परमानेंट होना, वो मूव करता है from one place to another place or one position to another position, one project to another project, searching for a good life, you know? अब ये माइंडसेट अगर हम कहें फिक्सेशन है दो क्वाड्रेंट्स के अंदर, सेक्रेटेरियल एस्पेक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट। एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट जिससे पॉलिसी मेकिंग करनी है, वो एक्चुअली पॉलिसी मेकर कम है, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट या इंटरप्रेट करने वाला जरूर है। पॉलिसी मेकर इज अगेन इन द हैंड्स ऑफ द हिडन हैंड, एंड दैट हिडन हैंड is closely associated with the administrative layer, और ये administrative जो layer है, ये permanent aspect of the bureaucratic institution. Decision making, decision implementation, decision reviews, again in the hands of the administrator, the administrative hierarchy. Whereas the executive hierarchy, which joins in after a process of examination, which is even like something of a predefined channeling, I would say, not funneling, channeling mechanism of placement of positions. बस इतनी ही वो connect and disconnect हो रहा है, और वो connect and disconnect होने के बाद what is happening कि the system is running on an auto, और इस ऑटो को रन करने वाले the one who are the administrative layer aspect people. Executive should have been the policy maker, the policy implementer, the policy reviewer, not in that case. That is just the face. They are as the face of a hidden power. That hidden power which is placing them and then saying, these are the people who will be working on my behalf, and all the objectives that are predetermined, predefined will be achieved. अच्छा, अब let's say there was a time कि जहां पे हमने इसको रीस्ट्रक्चर करने की बात की, इसको रिव्यू करने की बात की, इसको रीऑर्गेनाइज करने की बात की, तो वहां पे ये सिस्टम इतना डग इन है through the administrative mechanism into the social mechanism. The people who are suffering from the system don't want the system to change, because they say, if this power mechanism is gone, who will be our savior? Who will defend us? हमारा काम कौन करे? हम किसके पास जाएंगे? हमारी बात कौन सुनेगा? तो हमें तो ये लाट साहब चाहिए, और लाट साहब को अच्छी गाड़ी में होना चाहिए, लाट साहब को बात सुननी नहीं चाहिए, लाट साहब अपने मूड में होने चाहिए, तो वो अच्छा लगता है। ये क्या हुआ? एक आम सा बंदा आके बैठ गया, ये क्या है? इसने तो आम से कपड़े पहने, ये हमारे काम नहीं करवा सकता भाई,
There is a big gossip going on in the entire society. आमदन, इसके तो जूते भी बड़े अजीब से हैं। ये नहीं, ये कहाँ जाएगा, इसको तो कौन एक्सेप्ट करेगा, ये कहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर बन के आ गया। नहीं, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, द पर्सन हु हैज दिस status that speaks for that position. So the institution say the survival of the person who speaks my language. If you speak your mind, you're outcasted. You are not part of that system that still prevails us. What? The question, कब तक चलेगा? Good questions. अगर आप कह रहे हैं कि सर कब तक चलेगा, I ask myself this question again and again. ये देखें, ये उसी तरह है कि आपने एक फसल है ना, उस गांव के अंदर उस फसल लगाई है, बाढ़ फिर आ जाती है, फिर उसी फसल की बात आ जाती है, वही मट्टी चल रही है, वो मट्टी चल रही है। आप कह रहे हैं कि सर इस मट्टी को कहां तक नीचे तक डग करके चेंज करेंगे, सैलाब आ जाएगा, कोई और सेटलमेंट आ जाएगी, तो विल इट बी चेंज? यस, इट विल चेंज. Again, the mindset of the society. Again, the mindset of preparing for the CSS exam. You're going there to pick up a sack of responsibility on your shoulders, not the power which you will be using for your own personal benefit or the benefit of the very few. If you're wearing that blue uniform and a police or black uniform or olive green uniform, if you're part of the customs, you need to look at as a facilitator, a person who will be the catalyst to solve the problems, a person who speaks the language of Umar, Hazrat Umar, who speaks the language of justice through Umar's law. How to reach out to the people? Very simple, very simple, very simple. Develop micro programs. Keep on implementing in the macro programs, develop micro social programs, which I did very successfully. Nobody will touch you there. Yes, your CADA is there to solve the people's problem. Develop those micro social welfare programs through the state institution, through your position, that will help facilitate people. And the people start getting the benefit, they start getting closer to you start getting closer to them, and ultimately the institution, the learning process takes the mindset into from a power base to a service oriented structure. Bridging, apna word bada pyara use kar, bridge. You see, these will be the two sides of the river will always be at distance. Water has to flow. A bridge has to be designed in a way the people of both sides should be able to move to and fro. This gap can be bridged once we restructure, rethink, reevaluate the social way of interaction. And that includes your institution of a mosque, institution of a small shop at your mohalla, the small road that goes through the locality. उस रोड की कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा रखिए कि जिसके अंदर से आपको लगे कि it is not serving the few, it is meant for everyone. The plantation of the tree should be beneficial for everyone. Saving of water, it should not be done. I have got an access water, so I can do whatever I want. No. It needs to be saved as
a basic necessity for everyone. Your car passing through that same street, you have the power to honk, but not doing that because somebody's sick, somebody's sleeping. You're not rushing the car with the speed that its sound should not be the one that should be disturbing or creating your grandeur. Oh, your distribution of the food should not be in a selfie mode. It should be as a norm of a society. So from your own doorstep to from your own street, you will start making the change. And then once its change is taken through your examination process into the institution that you wish to join, then the institutional mindset will start reconfiguring, because the person is coming from a society which does not accept power as a main theme of its oppression. And then realizing and telling everybody all rules and regulations are for all. My parking lot, which is the water, the tree, the electricity bill, the gas bill, the basic design or encroachment mechanism that हर बंदा फटाफट नमाज के लिए रोजे के लिए भागा जा रहा है, दरवाजा खोलता है तो उसकी जो गेट से रोड तक का थड़ा है वो एनक्रोचमेंट में, और वो जा रहा है, वो चोरी है, उस चोरी वाली जगह के ऊपर पांव रख के नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, वो रोजा रख रहा है, इफ्तारी कर रहा है. You need to stay in structure first. मेरे घर का दरवाजा खुलते ही चोरी नजर आती. मैंने वो गेट से लेके रोड तक थड़ा आगे किया हुआ है. That pavement should not be there. It's a theft. It's a dishonesty. उसी थड़े के ऊपर से फिर मेरा गाड़ी का पानी भी बहता है, मेरी मोटर का पानी भी चलता रहता है. So remember, it is the basic value system in a society that need to be looked at. Things will start happening. Institution will get its mindset back. ये mindset फिर आ जाएगा आपके पास कि हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया जा रहा है, accountable ठहराया जा रहा है for his action, which was not accounted for. But yes, law is for everybody. Think, yeah. और कुछ नहीं, सोचो. मैं फिर यासिर से और बाकी बच्चों से कहूंगा कि मुझे फिर बताइएगा, इससे पहले हमें करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन यार, कि एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पर्सन हु वांट्स टू जॉइन अ गवर्नमेंट, उसको कितना अच्छा क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, जो कुरान कह रहा है. और तुम सोचो, और तुम सोचते क्यों नहीं? हर आयत यहाँ पे रुकती है. और तुम तहकीक करो, और तुम तहकीक क्यों नहीं करते? कुरान बार बार कहता है. These are all W's, all Y's that you need to put in mind. It is my action that need to be corrected, not others. If I start doing it, this institution will regain its mindset of a service, which the journey that started with Quaid-e-Azam, the journey that started with Allama Iqbal, the journey that started with so many who brought the aspirations of serving people by sitting at the top and realizing this is the biggest of the biggest responsibility. हर रोज शीशा जरूर देखिए, एक मिरर टेस्ट है वो कर लीजिए. मिरर टेस्ट के अंदर आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए. इज इट राइट?
Is it ethical? If I do it, what will the people will say about it? ये 3 टेस्ट हैं, आपको अंदर वाला ऑडिटर बता देगा कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं, आप जो ऑफिस के अंदर आज जो कॉल सुन के किसी बंदे का या बंदे का काम करने जा रहे हैं, इज इट? तो दैट इज an ethical mirror test. Look into your eyes. Ask yourself a question. Is it right? Is it ethical? What would the people will say if I do it? अगर तीनों का सही जवाब आ जाए, do it. If any of the answer fails, stop. Reconsider. Don't do it. Sir, sorry for the interruption, but Sir. the meeting will end in almost 6 to 7 minutes, so we request you to conclude it, please. All right, beta. All right, beta. I can continue. I love the topic because I know कि माशाल्लाह इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग positions पे बैठे होंगे. Yeah, And yeah, sir. That's really interesting topic, sir. But we are running out of time. The meeting so will nice. end So nice. within So nice. 5 to 6 So, minutes. inshallah, most of you will be sitting at the responsible position. Just tell yourself, okay, what I have done to serve my conscious. मेरे conscious को क्या चीज सही ले है वो मैं करूंगा. तो माइंडसेट ठीक है. मैं आपको कहूँ इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट हमारी सोसाइटी में, वो इंडिविजुअल एक सोसाइटी से आ रहा है, वो सोसाइटी का इफेक्ट लेके आता है इंस्टीट्यूशन के, और वो उस इंस्टीट्यूशन को सर्व करता है. इंस्टीट्यूशन आगे लोगों को सर्व नहीं कर पाता, और वो लोग भी उस सोसाइटी को ही नहीं चेंज करना चाहते. तो हमें पहले सोसाइटी को रीच आउट करना होगा कि हमें इस सारे सिस्टम को अपने लेवल पे, अपने फुट होल्ड के ऊपर. इसलिए मैं कहता हूं द सोशल फुटप्रिंट लीड्स टुवर्ड अ गुड ब्यूरोक्रेटिक फुटप्रिंट, and that bureaucratic footprint will reach out to the people. Sabas. ठीक है जी? And inshallah, you will be able to make a difference. Now I'll say you go for the question answers. I would love that. Yeah, sir. Anybody for any question? Sir, thank you so much. Sir. Yeah, sir, exactly. Thank you so Please. much, sir. It has been really an insightful session, sir. We have learned so much things from you, especially the point you raised regarding critical thinking. As I also want to highlight this point that in the current scenario, especially the educated people also, they believe in fake news, whatever they come across. They believe it and they spread it out, and this causes misinformation. And especially being educated and the students of these social sciences, we need to focus it on such news and think it critically. Thank you so much, sir. And now the floor is open for questions. If anyone has any question regarding this uh, discussion, or you want to add something, or you have any comments, the floor is open for you. Yes, anyone? Sir, I want to ask one question. Ji, Uh, please. so we have been talking about the politics administration dichotomy, that people argue that these two branches should be separate from each other, so that they would not interfere in each other's business. So what do you think, are these uh, uh, two branches should be separated completely, or there should be any link between them, so that the policies should be more inclusive and citizen centric, sir? अच्छा, ये देखो बहुत आसान काम है कि अगर the person who is joining as a position person of decision maker, he should get an orientation of 3 years or 4 years right from the administrative layer. Once the hierarchical movement is achieved by the person, he understands what are the gaps and disconnects in that particular administrative, rather than going and sitting at the top, which is disconnected from the bottom. तो मैं कहता हूँ पर लोग ट्रेवल करके ही यहाँ से आए.
आपने 3 इयर्स का ट्रेवल करें ही, जिसको हम कहते हैं कि आप सिंपल, बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप कहें कि जी 15वां जो है ना 14, 15, 16 ग्रेड वाली जर्नी को वो एक क्या करे, एक फुलफिल करे जर्नी, दे शुड वर्क एट दैट लेवल एंड देन दे शुड गो एंड सिट एट द 17th ग्रेड। तो उनको लगेगा कि वो मैं ओवरलैपिंग काम करके आया हूं, तो ओवरलैपिंग काम से अदरवाइज देयर इज अ डिस्कनेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज हियर एंड द एग्जीक्यूटिव इज वर्किंग हियर, जिसको मैं इसी कैडर में कह रहा हूं, लेकिन दे शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो व्हाट विल हैपन, आपको वो सारी जो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है वो समझ आ जाएंगी। नोबडी विल बी एबल टू ट्रैप यू कि जनाब आपको नहीं पता। तो दैट इज व्हाट आई से, इसको वर्क शैडोइंग कहते हैं कि आप वर्क शैडोइंग में पहले उस प्रोसेस से गुजरें। मे बी मैं 3 इयर्स ज्यादा कह गया हूं, आप कहेंगे सर 16 months, तो 16 months वर्क शैडोइंग प्रोसेस से गुजरें, देन गो एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोजीशन, और फिर आपको बॉटम कनेक्शन का सबका पता होगा एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट, रिकरेक्ट एंड फिल अप द गैप्स। Thank you, sir. Got it, sir. Thank you. Uh, so, due to shortage of time, we are now about to conclude our session. So, on the behalf of the whole team of PASA, first of all, I genuinely thankful and grateful to our distinguished speaker for today's webinar, Sir Ikramul Haq Syed. So, we are genuinely thankful for your precious time and your insights you have shared with us. And I'm also thankful to our mm, audience and participants who have been joining us throughout this webinar series for their patience and their interest in this webinar series. And I also request all of the participants to show their keen interest in the remaining 3 webinars. They will be on crucial topics like this. So I request all of you to show your keen interest and presence in the upcoming webinars as well. Once again, I am thankful to our speaker for today's webinar, Sir Ikram Haq Thank you Syed. very much. Sir, thank Stay you so much blessed. for your precious Stay time. blessed. Assalamu So, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. thank you, everyone. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, everyone.